हेलो हेलो गाइस। पहली बात, मेरा नया वीडियो जाके देखो। दूसरी बात, अगर तुम नहीं देखा तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तीसरी बात, अभी के अभी जाके देखो। क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया। और आज लेट हुआ बिकॉज मैं एडिट कर रहा था और मैं एडिट आफ्टरनून में करने वाला था, बट मैं सो गया। आज जो वीडियो डाली ना मैंने अभी जस्ट, उसकी एडिटिंग, तो वो मेरे को आफ्टरनून में करके छोड़ना था एंड देन नॉर्मल 7:30 के टाइम पे स्ट्रीम करना था, बट मैं सो गया तो प्रॉब्लम हो गई। हूटाओ बिल्ड बताओ, निकाल ली हूटाओ। हूटाओ को 4 पीस क्रिम्सन विच दे दो या 4 पीस शिमेनावा दे दो, ठीक है। एंड क्या बोलते हैं, EM सैंड्स प्रेफरेबली या HP सैंड्स, ठीक है। पायरो डैमेज गॉबलेट एंड क्रिट सर्कुलेट। 65 का क्रिट रेट मेंटेन करना उस पर। ड्रैगन्स बेन दे रहा है तो HP सैंड्स दे देना उसको, ठीक है। और HP सैंड्स में हर जगह EM लाने का ट्राई करना। EM क्रिट रेट, क्रिट डैमेज। हेलो गेमिंग फ्रीम, धमकी किसको देता है बे? बाय द वे लाइक और शेयर दोनों कर दे वीडियो प्लस स्ट्रीम। थैंक यू भाई। वीडियो बोले तो वो न्यू बॉस वाला शॉट, यस न्यू बॉस वाला। वायरस बॉस बोलता हूँ मैं उसको, साला गंदा वायरस जैसा दिखता है। मेरा रेजिन 151 पे यार फुल्ली रिप्लेनिश को 1 घंटा है। नेवर माइंड, मैं 1 घंटा तो वेट नहीं करने वाला। मैं जाके तीन बार डोमेन करके आ रहा हूँ, 3 बार। ठीक, मेरा भी यूज कर देना ब्रो रीसेट से पहले। रीसेट कब हो रहा है मेरे को पता ही नहीं। I have knowledge but I don't have him, so whom should I give it to? Give it to any of your DPS catalyst player characters, I mean. 5 दिन है ना, ठीक है। पूरा टाइम CS2 खेलता रहता है भाई, मजा आता है दोस्त लोग के साथ CS2। Can I join the co-op? I can help you get precious chest. After a while, I'm just gonna go do some domains. Hi Jammer, welcome to the stream. भाई 80 लाइक का गोल रखता हूँ, आजकल सिर्फ 9 लोग आ रहे हैं देखने के लिए। गलत हो रहे 80। Take it easy. Hello Saida, welcome to the stream. We're gonna use Novelet. मेरे को लगता है अगर मैं बेनेट यूज करूंगा तो मुझे गंदे आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे, तो बेनेट यूज ही नहीं करनी। यार निवलेट अच्छा तो है बट प्ले स्टाइल पसंद नहीं है, एक पोज में खड़ा हो जाता है इसलिए होटल निकाला है। ओह ठीक है, एवरीवन चॉइस। हाउ टू डील विद गेंशिन बर्नआउट? आई वांट टू प्ले बट माय बॉडी इज डिनाइंग इट। शुड आई टेक अ ब्रेक? बर्नआउट किस कारण है वो बता पहले। आया का रिव्यूज आज क्या है? ट्यूसडे, कल होएगा अकाउंट रिव्यूज बड़ी। Solidified by royal decree. silence Into the wind. gather settle down. Clouds high. The birds call. Midnight phantasmagoria. The tides beckon. गुनीत क्या बोल रहा है? एडिक्शन, फिजिकली एग्जॉस्ट हो गया। फिजिकली कैसे हो सकता है? देख, अगर देखो बर्नआउट होता है ना तो गेम में खाली इतना काम किया कर, जस्ट ओपन अप, यूज योर रेजिन्स, डू योर डेली कमीशन एंड एवरीथिंग एंड देन क्लोज द गेम। आधा घंटा में लगेगा। और अगर ज्यादा ही कुछ वियर्ड लग रहा है तो फिर जस्ट डोंट प्ले। वाई पिंग इज भाई, मेरे को एशिया सर्वर पे पिंग हाई आता है, मुझे पता नहीं क्यों। माई फिशल इज सब DPS बिल्ड। Try claiming artifacts at the tree with Teda since you check it is a part of the tree. Artifacts at the tree. Oh. Defense sands. ये तो नसीब भी नहीं आता है।
क्रिट डैमेज, अटैक, डिफेंस परसेंट। डिफेंस परसेंट देख, 2 डिफेंस पीसीज आई है। क्या करूँ ये गेम का? मी कम टू शो यू समथिंग। यस कम ब्रो, यू सोलो नोवी। सोलो नोवी कम डैमेज देता है, इसलिए मैं काजुआ फिशल सबके साथ यूज़ करता हूँ। थोड़ा 30k का डैमेज दे सकता है वो, तो लाइक पर चार्ज अटैक टोटल में वो 100 के मार देता है। 30k इंटू 4 होता है ना, 120 के। Bow your head. The wind knows me. As one with wind and cloud. Stabilize. Odds reveal thyself. Silence. One with nature. Clouds high. The birds call. Midnight Phantasmagoria. Be sanctified. I get awesome substats with defense or HP as main stats. Game Jo, Maja, how are you? I hate this domain. This is the only domain that I'm doing right now and using all my weird artifacts in the strongbox and emblem. यार ये HP सैंड या अटैक सैंड में से कुछ हो जाए। सबस्टैट्स भी तो दे। इलेक्ट्रो डैमेज गॉबलेट, अटैक गॉबलेट, ठीक है भाई। ड्रॉपलेट्स भी देता। ये हाइड्रो ट्रैवलर डीपीएस ना होकर सपोर्ट हीलर होते तो निवेलेट बहुत उपयोग होता। अभी तो यू कैन यूज ना, बिकॉज हाइड्रो ट्रैवलर के ड्रॉपलेट्स भी निवेलेट कैन यूज टू डू हिज चार्ज अटैक्स। Bow your head. The wind knows me. As one with wind and cloud. Solidify. By royal decree. Silence. No rest for the wicked. Fallen leaves. Adorn my night. Into the wind. The tides beckon. Hey, yo, Wind, welcome to the stream. Hi, team. Time and welcome to the stream. Daily college travel की वजह से शायद I can do my daily journey but can't do any quests or I should take a break from doing long quests and exploration. हाँ, you can anyway कभी भी कर सकता है वो चीज़। एक्सप्लोरेशन वगैरह कभी भी you can pick up. Just daily commissions वगैरह निपटा ले हर दिन का, बस और कुछ मत कर। I got a hydro damage bonus goblet with double crit and HP and flat HP subset for my Lian. भाई सब लोग लाइक और सब्सक्राइब करो चलो। ओह गॉड यार, मिल ही नहीं रहा ढंग का पीसेस। कितना फार्म करूँ बे? एटलीस्ट एक हफ्ते में एक आर्टिफैक्ट दे दे। अच्छा वो भी नहीं कर रहा है। माई स्ट्रीम्स आर गुड स्ट्रेस रिलीवर्स। यार रुलाओगे क्या? मैं हूँ ही ऐसा अच्छा आदमी यार, क्या बोलूँ। लेट्स सी स्ट्रॉन्ग। मैं सोच रहा हूँ हाइड्रो हार्ट ऑफ डेप्थ स्ट्रॉन्ग बॉक्स करूँ। हाँ मेरे को एम्बलम फार्म करते करते 1 मंथ हो गया, स्टिल नो गुड सेट फॉर रेड एंड। अभी एम्बलम फार्म मत करो ना, एम्बलम तो जैसे निकाल सकते हो। ये लिनेट कौन है? 4 पीस में ना 21 है या 19 क्रिम्सन विच से कंपेयर। तुम दोनों में से कोई भी देख सकते, दोनों आर गुड फॉर दिस। उठाओ। अच्छा यूर लिनेट। एनीमे नहीं यार, देखना तो है बट टाइम ही नहीं है सर्च खोल के कुछ करने के लिए। ब्रो फिनिश वर्ल्ड क्वेस्ट का रिसर्च इंस्टीट्यूशन वाला क्वेस्ट? हाँ वो तो कर दिया, बट देयर इज वन क्वेस्ट दैट आई एम नॉट डन, द अनफिनिश्ड कॉमेडी वाला। एम्बलम पे उड़ाने का ही सोच रहा हूँ मैं फिलहाल। अच्छा मैंने तुमको इनवाइट नहीं दिया, सॉरी, वापस भेज दे। ड्रैग ड्रजील।
कौन सा वाला लगा है? I completed my degree in computer science honors, bachelor's in computer science honors. मेरे को noblesse sets चाहिए for some characters. Heart of Depth अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से. 4 piece Heart of Depth novelette के लिए. Not sure बेटे. रेडन के साथ कौन सा 5 स्टार कैरेक्टर आ सकता है? रेडन के साथ आई एम नॉट श्योर. नया भी हो सकता है या कोई पुराना भी आ सकता है. होपफुली नया ही आएगा. अरे 2 कैरेक्टर चाहिए थे मुझे दिखाने के लिए. अच्छा अब ये तो नहीं पता. मैं अभी लोग आ रहे तो फिर ले लिया. शिमिनावा भी है. मैं अपने वॉन्डरर को अच्छा बनाने के लिए आई थिंक वॉन्डरर के लिए मैं वेरिडेसेंट वेनरर ले लूँ. पता नहीं. अब इस कब कर दो कि मेरा बता दो क्योंकि आजकल बिजी चल रहा है. मैं थोड़ा ऑफ स्ट्रीम करके दूंगा अभी. तो मैं देखो डिस्कॉर्ड पे मैसेज करूंगा. बस डिस्कॉर्ड पे मेरे को बता देना तेरा आईडी पास अगर तूने चेंज वेंज किया है ओटीपी वगैरह. क्या बोलते हो गाइस? एम्ब्लम पे उड़ा दूं? मेरे को एम्ब्लम, शिमनावा, हार्ट ऑफ डेप्थ एंड नोब्लेस में से चाहिए. अभी लीक्स बोल रहे जोंगली का Melusines की are स्किन्स आ रही. beautiful हाँ आ रही. creatures. They are the pride of Fontaine. Be sure to befriend them. वीवी पे उड़ाओ. Cause them no harm. See? Wait. Okay, let's get going. मेरे को The एक next location on my list is really far away. मेरा शिंगचू है ना. मेरा शिंगचू 42/188 पे है. ठीक है. और उस पे आर्टिफैक्ट्स पे 4 पीस. यहाँ पे एक गॉबलेट है जिसपे क्रिट रेट नहीं आया है. अगर इस पे क्रिट रेट आएगा तो मेरा शिंगचू को 50 तक का क्रिट रेट मिल जाता है. एंड उस पे जो फेदर है वो फिर मेरे को तो खाली उसके लिए मतलब अभी यही चाहिए. आइदर आई गेट क्रिट रेट वाला दिस विथ इनसेन अमाउंट ऑफ क्रिट डैमेज सब स्टैट्स. क्या पता भाई. Bow your head. एम्ब्लेम ही करूं. ठीक है. देखो एम्ब्लेम बकवास. ये गॉबलेट नहीं चाहिए को इसका. अगर ये हाइड्रो डैमेज बोनस हुआ इनमें से एक विथ क्रिट रेट के डैमेज मैं रो दूंगा. पायरो डैमेज है. ठीक है. हाइड्रो डैमेज बोनस. ओ और एक गॉबलेट आया. हाइड्रो डैमेज बोनस. प्लीज हाइड्रो डैमेज बोनस. शिंगचू बिल्ड हो जाएगा. जस्ट वन माई 50-50 एंड गॉट हुटाओ. लेट्स गो आदित्य सिंह. कॉन्ग्रेचुलेशंस. मुझे भी मन कर रहा है पता है हुटाओ निकालने का. बट मैं नहीं निकालूंगा बिकॉज नहीं चाहिए. हाइड्रो डैमेज बोनस. ये अटैक गॉबलेट है. इस पे क्रिट रेट आएगा क्या देखते हैं. चलो. विथ न्यू वीडियो बी ग्रेट फॉर द स्ट्रीम. किजुना भाई बुला रहे मेरे को. किधर तो किजुना किधर गया है? I see the value in my own work, but I also see the meaning in all the endeavors of the people of Fontaine. किजुना क्या है? I टू believe I प्लेयर will है. continue to take pride in fulfilling my duties. भाई ऊपर वाला चैट पढ़ लो एक बार. रिकमेंड मी सम डीपीएस कैरेक्टर्स. एज सपोर्ट कैरेक्टर्स ही पड़े हैं मेरे पास. तुम्हारे पास क्या कैरेक्टर्स है वो तो बताओ. अगर तुमको कोई डीपीएस कैरेक्टर चाहिए. अच्छा मेरे को पता है क्या करना चाहता है. आई थिंक आई नो. आई थिंक आई नो. हुटाओ इज अ ग्रेट डीपीएस. नोवेलेट इज अ ग्रेट डीपीएस. रेडन शोगन है. मुझे पता है तू क्या कर रहा है ब्रो. मैंने देखा है. आई नो इट.
क्या गंदे लोग हैं भाई। ER गॉबलेट, ER गॉबलेट, अटैक गॉबलेट बोला मैंने। रेडन के बोथ सैंड्स एंड गॉबलेट, गॉबलेट ER गॉबलेट नहीं आता है। आई तो प्रेफर आया का ओनली रहा है, तो इसलिए एक बार यूज करेंगे तब मालूम पड़ेगा। 7 दिन में आ रहा है, 1 हफ्ते में देखते हैं। नो बॉल टिक। Terra smash! यही सब कर लो तुम पहले, गंदी गंदी हरकतें। Yeah! कुछ भी करते हो। चलो मैं ऊपर उड़ाता हूँ। Quake! मेरे को आज पता चला AR-56 ओ शीश ER का गॉबलेट ही नहीं होता। वाह। ओके वेट, मेरे को वो गॉबलेट एक बार अपग्रेड करके देखना है। इस पे क्रिट डैमेज आएगा, क्रिट रेट आएगा तो अच्छा होगा। बट और कौन यूज करता है अटैक गॉबलेट? फालतू में आर्टिफैक्ट वेस्ट कर रहा हूँ। नहीं, नेवर माइंड। हाँ, मेरे पास ये एक अटैक सर्कुलेट मैंने क्यों अपग्रेड किया मेरे को पता नहीं, बट क्या गया है ये। इसको फुल करके देखते हैं क्या होता है। ये किसको ही दूंगा मैं ये। टियर लिस्ट, हाँ हाँ टियर लिस्ट करता हूँ, 1 सेकंड रुक। Melusines are beautiful creatures. They are the pride of Fontaine. Be sure to befriend them and cause them no harm. Bro, why can't I get such good pieces in some other stats? भाई अटैक सर्कुलेट, क्रिट रेट, क्रिट डैमेज का मिल। हे भगवान, ना जीन है मेरे पास, ना शेनहा है मेरे पास। सैड भाई। ये देख एक और अटैक गॉबलेट। ये सारे डिफेंस पीसेस है मेरे पास। दिमाग खराब होता है मेरा डिफेंस पीसेस देख के। ये देख एक और अटैक सर्कुलेट है विद HP, क्रिट रेट, क्रिट डैमेज। Water comes in many flavors to the discerning palate. Mondstadt's water is crisp and pure, while water from Liyue has an enduring aftertaste. In Inazuma, the water possesses a depth of flavor unlike any other. Sumeru's water has a rich and complex flavor profile, but it must be savored patiently to fully appreciate. चुप करने बोलना इसको, कितना बड़बड़ करता है भाई। इमे मेरे ट्रैवलर का फेदर देखकर रेट करो उसको, मुझे पता नहीं क्या क्या करो उसका। डिलुक यूजलेस। भाई मैं सोच रहा हूँ येलान को लेवल 90 कर दूं क्या, या नवलेट को लेवल 90 या जोंगली को लेवल 90। मेरे पास बुक्स तो है, बट देन फुरिना को देने के लिए बुक्स नहीं रहेगा मेरे पास, वही है। ओह 171 बुक्स लगता है, 121 भी नहीं। नहीं कितना लगता है, 150 और ज्यादा लगता है साला चोर। मेरे को लगा 121 बुक्स लगती है। Terra smash! इसके 60 बुक्स दिए तो कितना लेवल जाएगा, 1 पे ही जाएगा। ये पूरा मिला के एक लेवल 90 है। आई थिंक सेव ही करना बेटर है, लाइक इट्स गुड फॉर येलान। किजुना का गॉबलेट ट्रैवलर पे। तेरा ट्रैवलर है ही नहीं इधर लगा हुआ। सेव किया मैंने, इसका डिलन नहीं है मतलब। जे के हिल्ला, थैंक यू फॉर द सब्सक्रिप्शन।
चलो मैं टीयर लिस्ट कर रहा हूँ अभी तुम लोग को हटा रहा हूँ मैं अपने वर्ल्ड से वी आर गोना डू सम टीयर लिस्ट करेंगे टीयर लिस्ट हेलो केके I'll show you what I mean by tier list. I अरे see the chest पर value in लेके my जा रहा own था work, आपको but I also अच्छा, see the meaning बाद में in करते all the थोड़ा। endeavors of the people of Fontaine. I believe I will continue to take pride in fulfilling my duties. तो क्या सबको ये दिख रहा है क्या ये सबको दिख रहा है यस सो हम आज Water क्या comes कर in रहे हैं many इधर flavors to the discerning हम आज क्या palate. कर रहे हैं इधर Mondstadt's water is ये crisp सारे and characters हैं, pure, up to while water from 4.0. Liyue has an ठीक है? enduring aftertaste. In We Inazuma, are going the water to possesses a depth of flavor unlike place all the any characters tier So wise Merit's देखते हैं water कौन कितना है and then has a rich you and guys will complex flavor profile. let me know Must be savored patiently. What- to how do you fully feel about appreciate that? it. we will start with albedo मैंने as such कभी albedo यूज नहीं किया है but जहाँ तक मेरे को पता है albedo is a good support character for geo DPS characters so I would say as a support he should be B tier kind of people are saying C B C B A मेरे लिए अल्बेडो इज अ बी टियर कैरेक्टर ठीक है एम्बर पे आता है सीधा डी पे डालूंगा मैं पूछना भी नहीं है कुछ डायरेक्ट सी अयाका ना अयाका अयाका के 2 टीम कॉम्स आते हैं सो पॉसिबिलिटीज ऑफ अयाका इज इन मेल्ट एंड इन फ्रीज तो आई वुड से अयाका फॉर फ्रीज कॉम्स एंड प्रॉपरली बिल्ड तो वो अच्छी खासी एस टियर बन सकती है तो आई वॉज थिंकिंग ए टियर बट देन फ्रीज एंड मेल्ट दोनों में उसका डैमेज आउटपुट बहुत ज़्यादा है अच्छा है एंड शी कैन ईजिली किल अपोनेंट्स लाइक आया का परमा फ्री स्ट्रीम विद शेना इट इज़ सो गुड आई वुड से आया का इज अ एस बारबरा सोचूंगा भी नहीं डी में डाल दूंगा बेडो नाउ अनपॉपुलर ओपिनियन है बेडो का shields and her electro applying like a sub DPS wise is very good. So I would keep Bedo on B only again. उसका shields, उसका electro application, you can use Bedo in hyper bloom teams also. You can use in electro charge teams also. काफी fruitful use करती है Bedo. अगर सब डीपीएस काइंड ऑफ है वो डीपीएस होती तो फिर आई थिंक ए पे आ जाती बट बेडो इज बी बेनेट पूछने का भी नहीं एस हीलिंग बफिंग ही इज द बेस्ट इन दैट बेनेट तो एस है चोंगयुन आई हैव नो आइडिया अबाउट चोंगयुन आई एम गोना पुट इट इन सी डिलुक पहले एक एस टियर कैरेक्टर हुआ करता था नाउ आफ्टर ऑल दीज कैरेक्टर्स दैट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द गेम दी ऑल दी अदर पायरो कैरेक्टर्स डिलुक तो चल दिया बी में भाई डिलुक बी में चला गया है नॉट गोना लाई डिलुक बी में घुस चुका है अभी डिलुक का अब ही इज बी ओनली पूरा डायोना Let's see. Diona is mainly used with Ayaka because of the shield and the heals and the cryo application. तो Diona as such उसका shield जितना कुछ खास है नहीं heals भी are okay only. Diona is kind of a B tier character only. I don't feel Diona is A. Diona is B. Diona will always be B. Always be. Fischl.
फिशल, अब जब ये नया आर्टिफैक्ट सेट आया है ना, गोल्डन ट्रूप, उसकी वजह से फिशल is near to S tier character but still not actually S. She is a A tier character now, Fischl, because Fischl का ult, उसका ability, it applies a lot of electro and it is so good when she's on her C6. She's so good, Fischl. You can use her in electro charge teams, you can use her in overload teams, you can use her in hyperbloom teams. She's overall very nice, A tier character for sure for me though. Ganyu, अभी लोग मेरे को मारेंगे, बट आई फील गान्यू इज ऑल्सो ए टियर कैरेक्टर. आई टेल यू व्हाई. पहले तो शी इज अ चार्ज्ड शॉट कैरेक्टर, ठीक है. गान्यू इज अ चार्ज शॉट कैरेक्टर. चार्ज शॉट से उसका डैमेज आता है, बराबर. पीपल यूज गान्यू मेल टीम्स 70 के 80 के दे सकते हैं, बराबर. बट उसके चार्ज शॉट्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू चार्ज, लाइक यू टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू चार्ज एंड देन शील्डर नेसेसरी है ही है उसको, बट शील्डर नहीं रहेगा तो शी इज ऑफ नो यूज, लाइक. तो आई थिंक शी इज ए टियर कैरेक्टर. Hutao, easily the best pyro DPS. Not the best, I would say one of the best pyro DPS because of her vaporized damage that she can deal. But she fails if you don't have a shielder. She fails if you don't have a shielder. अगर तुम्हारे पास shielder नहीं है and तुम dodging में अच्छे हो तो फिर she can be worked very well. But Hutao is a S tier character for sure. Lian, welcome to the stream. अरे लाख के ऊपर जाता है. Are you going without shield for 1 year? जीन अभी ऐसा, जीन अगर तुम्हारे पास कॉन्स्टलेशंस है ना तो फिर फॉर योर एनिमो कैरेक्टर्स एंड द कैरेक्टर्स दैट रिक्वायर अटैक स्पीड शी विल बी अमेजिंग. बट अदर देन दैट शी इज बी. जीन इज बी. Hutao requires it, but she still with C0 पे भी if you आराम से master the jump cancellation mechanics तो she can be a S tier character easy. काया पता नहीं कौन यूज करता है. आई वुड सजेस्ट काया C है. फिशल A tier है because फिशल can be used in electro charge and aggravate teams for mostly and mostly उसका damage comes from her ultimate. ज्यादा major damage can come from ultimate and अगर reaction नहीं मिलता है क्या बोलते हैं कचिंग है, सॉरी. मेक न्यू एम्बर टियर वर्स्ट. कचिंग, सॉरी मैंने क्ली बोल दिया. कचिंग विदाउट एनी रिएक्शंस इज नॉट दैट ग्रेट, बट ए आई वुड स्टिल गिव हर एन ए. क्ली बी है बे. नहीं, एक्चुअली क्ली इज ऑल्सो ए टियर कैरेक्टर. आई टेल यू व्हाई. बिकॉज उसके बॉम्ब्स ना, इफ यू बिल्ड हर वेल एंड यूज हर प्रॉपरली नो इन क्या बोलते हैं ओवरलोड या वेपराइज टीम में, शी कैन डील अ लॉट ऑफ डैमेज, लाइक अच्छा खासा डैमेज दे सकते हैं. एंड इफ शी गेट्स अटैक स्पीड शी कैन डील बहुत ज़्यादा डैमेज इन वेरी लो अमाउंट ऑफ टाइम. आई वुड गिव क्ली राइट नाउ इन बी. वेपराइज मेल्ट में बहुत डैमेज आता है. येस, वेपराइज मेल्ट वैसे में ज़्यादा आता है. लीसा, कहाँ लीसा रही भाई, जाए तेल लेने. लुमिन मोना इज अ सपोर्ट कैरेक्टर, ठीक है. मोना का और कोई काम है नहीं. मोना पीपल यूज फॉर अदर डीपीएस कैरेक्टर्स टू गिव देम मोर अटैक, ताकि उनका क्रिट डैमेज, उनका डैमेज आउटपुट ज्यादा हो जाए. तो मोना इज यूज जस्ट फॉर गेटिंग मोर डैमेज आउट ऑफ योर डीपीएस कैरेक्टर्स. तो आई वुड थिंक कि मोना इज अ बी टियर कैरेक्टर. लियान को क्या हो गया? लियान थोड़ा डर रहे मेरे इसमें. बस उसका बफ सबसे ज्यादा है. मोना इज भी बफ से ज्यादा. और क्या ही करते हो तुम मोना पे बफ से ज्यादा और क्या करते हो? सपोर्ट के अलावा मोना किधर यूज होती है बताओ मेरे को, बताओ ना. Lisa C. Lisa, okay, yes, उसका fourth ascension, yes, Lisa का fourth ascension can be used to reduce defense of other characters, so उसमें बहुत काम में आती है वो. Yes, वो ना तो है. Hydro apply. Water, meanwhile,
has a rich and complex Thrilling flavor Tales, profile. Hydro Apply, मोना का हाइड्रो एप्लीकेशन कुछ नहीं, डट्टी है मोना का हाइड्रो एप्लीकेशन. Don't come at me for मोना's हाइड्रो एप्लीकेशन please. It's not great. बहुत बकवास है. निंगवांग ना, जहाँ तक जितना मैंने देखा है ना निंगवांग पीपल को यूज करते हुए, लाइक 60 ओवर 170 160 वाले निंगवांग जो मैंने देखे हैं ना, उसमें she deals lot of geo damage, but because सिर्फ और जियो है, मोनो जियो है, she is a B tier character. अगर निंगवांग का डैमेज आउटपुट और ज्यादा होता ना, she is a good शील्डर प्लस डैमेज डीलर. भाई निंगवांग बी है फिलहाल, निंगवांग सी नहीं है भाई, निंगवांग तो बी है. ओके नोएल सी. अब नोएल का कुछ काम नहीं है. नोएल यूज्ड टू बी अ वेरी गुड स्टार्टर कैरेक्टर बिकॉज क्लेमोर कैरेक्टर कैन डील मोर डैमेज. That used to be very good for him. Chichi, I hate her. I'm gonna put her in D. चाहिए ही नहीं चीची. चीची मांगता ही नहीं है. चीची के लिए एक अलग टियर लिस्ट बनाना पड़ेगा मेरे को. चीची चाहिए ही नहीं, बकवास. रेजर आई थिंक एक सी टियर कैरेक्टर है. हट. हाँ तो C6 करेगा क्या तो 5 स्टार को. रेजर सी कैरेक्टर है. मेरे को ज्यादा रेजर का कुछ एज सच है नहीं. रेजर का अल्ट में उसका इलेक्ट्रो एप्लीकेशन आता है, बाकी इज अ फिजिकल का डैमेज डीलर. सुक्रोज जिसने भी बी बोला ना उसको मैं बहुत मारूंगा. सुक्रोज A टियर है प्लीज. सुक्रोज A टियर है. मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों. सुक्रोज C6 यूज करोगे ना, she is almost equal to C0 काजुआ. सुक्रोज का अल्ट से उसका श्रेड करना द एलिमेंट, एंड उसका ग्रुपिंग आल्सो इज वेरी गुड. व्हेन यू गेट हर C1 you can do 2 times. You can do 2 times. Her E ability you can do 2 times when she's C1. C6 होगा, she's equal to 1 C0 Kazuha. Sucrose is very good character when if you don't have a Kazuha. Some people prefer Sucrose C6 over Kazuha C0. सोचो. चाइल्ड तो भाई पूछने की जरूरत नहीं है, इतना बिग पीपी डैमेज देता है ना चाइल्ड. सीधा S है भाई. S प्लस होता तो उस पर भी डालता मैं चाइल्ड को. सैक्रिफिशियल के साथ या सैक्रिफिशियल के साथ 3 बार कर सकते हो. वेंटी छक्का साला वेंटी. मेरे को वेंटी पसंद ही नहीं है. मेरे को वेंटी बिल्कुल नहीं पसंद. मैंने उसको A B में डालना है. उसका ग्रुपिंग सिर्फ छोटे लोगों के लिए रहता है और फिर ऐसा हवा में रहता है. अल्ट करो अल्ट भी नहीं लगते हो हवा में. बकवास. जांगलिंग भाई S टियर है. मेरे से झगड़ा मत करना तुम जांगलिंग के ऊपर. जांगलिंग वेपराइज में उसके अल्ट C6 पे रहेगा ना, इतना डैमेज देना. 30-40 के पर अटैक रहता है उसका, वो पर गोल. जांगलिंग S है. ज्यादा बड़बड़ की है ना, मार दूंगा मैं. वेंटी मेरे को नहीं पसंद. वेंटी B है मेरे लिए तो. वेंटी B है भाई. वेंटी इज अ B फॉर मी. जाओ इज अ वेरी वेरी हाई इन्वेस्टमेंट कैरेक्टर. उसको बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है. जाओ के लिए C6 सुक्रोज चाहिए, उसको शील्डर भी चाहिए, बिकॉज सॉरी हीलर चाहिए. हीलर या शील्डर दोनों में से कुछ एक, बिकॉज उसका डैमेज चलता है, उसका अल्ट में डैमेज जाता है, अल्ट में हेल्थ जाता है. तो हाई इन्वेस्टमेंट की वजह से आई एम कीपिंग जाओ एट A. शिंगचू क्या बोले इसके बारे में. शिंगचू अगर तुम्हें स्टार्टिंग ऑफ द गेम मिले ना, शिंगचू मतलब ही इज अमेजिंग. शिंगचू इजीली S tier कैरेक्टर है भाई. शिंगचू इजीली S tier कैरेक्टर है. If you give him sacrificial shot, 2 बार you can do his E attack, your ult charges easily. 200 का ER देना पड़ता है. But her hydro application output in hyper bloom, overload, melt, vaporize सब में इतना अच्छा है ना, भाई. शिंगचू S है. जाओ S है मीन ये जिनियान पता नहीं के काम में आती है. मैंने कभी जिनियान यूज नहीं किया, ना कभी चाहा है यूज करने का, ना मेरे पास है. आई एम गोना पुट हर इन D. मेरे लिए गानी S tier है because she carried me from AR for 50. She won't damage and charge attack. She won't disappointment. Zhongli भाई पूछना जरूरी है. उसका बेस्ट शील्डर इन द गेम Zhongli S है. give him black tassel, full HP and he can take in all the damage that it's given to him. Zhongli full S है भाई. रोजारिया देखो, रोजारिया अगर C6 है ना, इज वेरी यूजफुल फॉर योर
physical damage characters because she can increase the physical damage output of the characters when she is C6 में उसका अल्ट से वो होता है एंड रोजारिया और किधर कोई टीम में यूज़ नहीं होती एक्सेप्ट क्या बोलते हैं फिजिकल डैमेज डीलर्स में तो आई वुड गिव रोजारिया अ बी ओनली यूला अभी जो भी लोग यूला को ए या एस में डालेंगे और जो बी बोलेगा उससे पहले मैं तो बता दूं यूला फिजिकल डैमेज डीलर एंड कैन इजीली डू 1 million थ्रू हर अल्ट यूला का और कोई काम ही नहीं है उसका अल्ट इज द मेजर डैमेज डीलर बाकी इज 20,000 30,000 12,000 समथिंग काइंड ऑफ दैट कम्स फ्रॉम योर नॉर्मल अटैक्स एंड एवरीथिंग यूला मेरे लिए तो ए है बिकॉज उसके अलावा और किधर शी इज नॉट दैट यूला के टीम्स भी लिमिटेड है यू नीड इलेक्ट्रोचार्ज टीम्स फॉर यूला एंड प्लस फिजिकल डैमेज डीलर तो फिर यू नीड दैट The most underrated character in my opinion is Yanfei. C4 कर दिया she can become tank Fei. Tank Fei in the sense shields आ सकते हैं उसको and उसके shields can आराम से ये अगर Yanfei को तुम vaporize melt में डालोगे ना she can deal a lot of damage and for in my opinion Yanfei is a very good character. She just उसको बहुत underrated रखा गया है I would suggest Yanfei is a A. मेरे पास Yanfei C4 है I think C5 है but मैंने कभी build नहीं किया है I would someday build her and create a showcase of Yanfei. And that is why Yanfei for B is A because pyro character है पहली बात तो and she can आराम से deal a lot of damage if you play her well and keep her in good teams. काजुआ भाई काजुआ आर्कॉन है the real आर्कॉन एनिमो आर्कॉन काजुआ वेंटी गया तेल लेने घटिया वेंटी टट्टेश है इसके सामने काजुआ ग्रुपिंग बेस्ट श्रेडिंग बेस्ट उसको इजी टू बिल्ड और क्या बोले काजुआ के बारे में कुछ पता ही नहीं भाई काजुआ बहुत है भाई यानफे तुमने यूज नहीं किया ऐसे तुमको ऐसा लगता है यानफे यूज करके तुम्हें समझ में आएगा योएमिया used to be a S character for me but now she is a A because of Lini's arrival. Lini के arrival के बाद योएमिया as a pyro bow user is not that great because Lini can deal much more damage than Yoimiya in one single shot than she can deal in multiple arrow shots. So Yoimiya also requires a hydro applicator and a shielder so that she doesn't get interrupted while she is doing her attacks because Yoimiya in her first attack, second attack, third attack, fourth attack ऐसे consecutively करके fifth attack पे she can deal massive amount of damage. तो one time मैंने Yoimiya से fifth attack का attack किया था 50,000 का तो अगर मैंने उसको और बिल्ड किया तो फिर she could have done 70 to 80 आराम से in her fifth shot only. So वैसा है तो योएमिया for me is a A tier character. अगर किसी ने वेंटी को डी दिया मैं मेंबरशिप कैंसिल कर रहा वेंटी मेरे लिए बी है भाई डी तो नहीं है. Okay, we come to सायू ओनली इन एक्सप्लोरेशन भाई और कोई काम ही नहीं है सायू एक्सप्लोरेशन में यूज होता है ज़्यादातर. आई वुड गिव सायू अ सी बिकॉज उसको लिए और कुछ है ही नहीं एक्सप्लोरेशन है. ये क्या है भाई ये पता नहीं. रेडेन शोगन डी पे डाल दूं रेडेन शोगन को जस्ट किडिंग. रेडेन शोगन इज आल्सो A tier कैरेक्टर फुल ऑन A tier है वो. S tier सॉरी. रेडेन शोगन इजी S tier कैरेक्टर है बिकॉज first of all Archon can deal a massive amount of damage, can easily recharge your team's ultimates and ज़्यादा उस पर इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं है. उसके लिए वेपन भी easily अवेलेबल है R5 catch through fishing. She is a mommy easy. Kujo Sara for all the electro DPS characters C6 में she is a beast. She can increase the electro damage output of electro DPS characters so much that the water possesses a and depth of flavor खुद से भी if you build her as a sub DPS no she can deal a lot of damage in a C6. Kujo Sara for me is a A tier character. मेरे लिए तो A है. मैंने कल अभी एल के अकाउंट पे यूज करके देखा था कुजो सारा अकेले में उसने अल्ट में इतना सारा डैमेज दिया था अकेले ने. कम था लो अमाउंट ऑफ में था बट दिया था उसने. बहुत अच्छा लगा था मेरे को. कुजो सारा इज अ A tier कैरेक्टर भाई. शी इज अ नाइस बफर फॉर इलेक्ट्रो टीम्स एंड शी कैन ऑल्सो डील डैमेज बाय हरसेल्फ अच्छे से भाई. मेरे लिए तो शी इज एन A tier. एक और टियर लिस्ट करना ना स्टोरी वाइज लोर वाइज. Melusines are beautiful creatures. They are the pride of Fontaine. Kokomi Be sure to befriend them. Best healer in the game. Best.
एंड हाइड्रो एप्लीकेशन भी बेस्ट है उसका. कोकोमी इज इजीली एस टियर कैरेक्टर फॉर मी. फॉर मी कोकोमी इज एस टियर भाई. she can walk on water, she can heal, she can apply hydro, she can भाई हर चीज़ फ्लेक्सिबल कैरेक्टर, किधर भी डाल दो काम में आएगी वो. ए भाई मेरे को एलॉय कभी मिली नहीं और कभी जानना भी नहीं मुझे क्यों नहीं मिली. Water comes in many दी है flavors एलॉय. to the discerning palate. Mondstadt's कोकोमी water को is गुणित ए बोल रहा है. crisp कुत्ते and गुणित pure, ना मारूंगा while ना. water from Liyue has an enduring aftertaste. थॉमा In Inazuma, Thoma, in my the water opinion, possesses used to a be a depth B of tier flavor character, unlike any but other. अभी उसका shields इतना कुछ काम में नहीं आता है. But has a rich and complex I flavor was gonna profile. put him in C tier, but Thoma for Burgeon teams is very nice. So Thoma तो only in Burgeons he is useful. You can also use him with Lineage because shields मिलता है उसको. If you have C6 Thoma तो बहुत अच्छा हो जाएगा. I think he still is a B worthy character. Thoma still is a B worthy character. Barbara better than Coco भी बोलता है गुनीत कुत्ता. Melusines Ito. are beautiful Ito the creatures. Geo They character. are the pride of Fontaine. Ito as a solo damage Be dealer sure to be बहुत friendly. ज़्यादा अच्छा डैमेज देता है Cause वो. them no But I harm. wouldn't keep him in S because वो एक जियो है. मैं नहीं समझ, मेरे को नहीं लगता जोंगली के अलावा और कोई जियो कैरेक्टर जो आएगा वो एस टियर बन सकता है. नाविया हो सकती है. ईटो इज ए टियर फॉर मी. ईटो रिक्वायर्स C6 गोरो. ईटो रिक्वायर्स जोंगली सो दैट उसको इंटरप्शन ना हो. एंड बेनेट भी यूज करना रहता है ताकि और उसका अटैक बफ हो सके. गोरो C6 गोरो कैन हील. नहीं, C6 गोरो कैन इज अ गुड सपोर्ट फॉर जियो डैमेज एंड C4 गोरो कैन हील. Goro is a good support for geo damage characters. I would give him a B slot. Navia B tier according to leaks. Ayato का banner 4.2 में आ रहा है. Shenhe. Shenhe is also A tier character because Shenhe can only be used for increasing the cryo damage of cryo damage dealers. And Shenhe is also an easy investment. 2-piece Shiminawa, 2-piece Gladiator, attack, सब attack से भर दो. The more the attack, the more her buffs are. So Shenhe for me is also an A tier character. Yunjin. अभी Yunjin ना, you can use Yunjin with Wanderer. You can use Yunjin with क्या नाम है इसका, Yoimiya. You can use Wanderer with और कौन है फास्ट अटैक करने वाला, Klee. But Yunjin इतनी कुछ खास तो है नहीं other than getting more and more attack speed through her constellations. So I would also give her a B. I see the value in my own work, but I also Yae see Miko the meaning in bhai. all the endeavors Yae of the Miko. people of Fontaine. I पहले believe तो I will pros बताओ यार continue मेरे to take को. pride in fulfilling my Mommy. duties. Electro application, flexible in electro teams, overload teams, electro charge teams, hyper bloom teams. She is just S by. Just because she's mommy, I'm giving her an S. Ayato से better hydro characters है अभी गेम में. Some people would have kept him S पे, but अभी देखा जाए तो Ayato on field hydro DPS है. Nevlet आ गया on field, which is so much better than Ayato. So I would give Ayato a A. Ayato को भी attack speed चाहिए रहता है ताकि वो ज़्यादा damage दे सके फट. But Ayato is Melusines also A. are beautiful People giving creatures. Miko A as if she doesn't They have are higher the pride usage of Fontaine. than Be Raiden sure this to abyss. befriend them and cause them ये no लान harm. ट्रिपल चॉपल पॉचल बॉकल एस भाई. ये लान तो किसी ने कुछ बोला ना, ये लान ए, ये गुरी तेरे घर पे आके मारूंगा अगर तूने ये लान को ए बोला है तो. ये लान सब ब्यूटीफुल सब DPS. C6 can easily destroy Tevat by herself and her thighs can also clench your face. बहुत बढ़िया है ये लान भाई. ये क्या है? कुकी शिनोबू. ये लान बिगुनी को घर पे आके मारना पड़ेगा मेरे को. Water Okay. comes in many flavors to the शिनोबू. discerning palate. जब शिनोबू Mondstadt's रिलीज water हुई is crisp and तब उसका pure, कुछ यूज ही नहीं था while water क्योंकि कोई from डेंड्रो Liyue कैरेक्टर्स has नहीं an थे. enduring aftertaste. जैसे ही डेंड्रो कैरेक्टर्स In आए, Inazuma, the शिनोबू water वेंट possesses a फ्रॉम depth of C flavor unlike any other. to
S. Sumeru's water, meanwhile, Her has a electro rich and application, complex her flavor heals, profile her flexibility in that must be electro charge savored teams, patience. hyper bloom Fully teams, appreciated. overload teams. She deserves to be a S character. मेरे लिए Shinobu is a S tier character. भाड़ में जाए जिसको लगता है वो S tier नहीं है. मेरे लिए Shinobu is S. Shinobu is the best. Full EM बढ़ा दो उसको. सब डीप उसको और हाफ ऑफ द टाइम वो अपने टीम में रहती है, सबड रहती है वो, एंड इतना अच्छा है भाई शिनोबू. शिनोबू इज ए. बेटर देन रिटन नहीं, ज्यादा हो गया. हेजो 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 पे क्या बोलते हैं, यानफे जैसा कैरेक्टर है. हेजो इज ऑल्सो यानफे कैरेक्टर, यानफे टाइप कैरेक्टर. अंडररेटेड, बहुत ज्यादा अंडररेटेड. ही कैन डील सो मच डैमेज. उसको C6 को जो सारा के साथ डाल दो और कितना ज्यादा डैमेज हेजो कैन गिव, यू हैव नो आइडिया. हेजो इज अ वेरी गुड कैरेक्टर. आई वुड गिव हेजो अ ए. मैंने कभी हेजो यूज नहीं किया, बट आई हैव सीन हेजो डू द डैमेज. बाय इट इज वेरी गुड, वेरी गुड. टाइनारी Melusines नहीं are भाई, हेजो ए beautiful है. creatures. हेजो They ए है भाई, occupy the प्लीज. fountain. हेजो इज ए. Be एंड sure डोंट to फॉरगेट लाइक एंड befriend सब्सक्राइब गाइस. and cause हेजो इज them ए no भाई, harm. प्लीज. हेजो इज ए. हेजो डेफिनेटली ए. डीलुक बी एंड शेने एस. लड़की का चक्कर. डीलुक बी किधर है? शेने एस नहीं, शेने ए है. डीलुक अभी काम में नहीं आता है. टाइनरी एज अ ऑन फील्ड एंड्रो डीपीएस बहुत अच्छा है, ठीक है. एंड आई डोंट थिंक सो देयर आर मेनी ऑन फील्ड एंड्रो डीपीएस इन दिस गेम. यू कैन से कावे है, बट कावे भी एक ब्लूम ड्राइवर ही है. नहिडा तो है ही, बट उसका अलहेतम भी है ही. अलहेतम तो सबसे ज़्यादा बेटर आता है. बट टाइनरी Water comes in before many Alhaitham, flavors to the Tainari would have been an discerning S tier character, but after Mondstadt's Alhaitham's water is arrival, Tainari is a crisp A and tier pure, character. while water Tainari from can Liyue do 3 has an charge attack enduring damage aftertaste. simultaneously once you In use Inazuma, his the water possesses ability. a depth of flavor unlike any Yeah. other. Sumeru's water Kole. has a rich Kole and भी कुछ complex खास flavor नहीं है. profile Dendro application है that must उसका, be और कुछ ज़्यादा savored काम है नहीं. patiently to fully College appreciate also it. used for Dendro application. I would give her a B. डोरी की मुझे बात ही नहीं करनी है. शी इज अ C. टट्टी. नीलू A tier. I won't give नीलू S, but नीलू should be A tier because नीलू का कोई और टीम्स है ही नहीं है गेम में. नीलू इज यूज्ड ओनली इन ब्लूम टीम्स. उसका ब्लूम आउटपुट डैमेज बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा है, बट उसके अलावा और कोई टीम है नहीं. एंड नीलू को अगर उसका की ऑफ खास जैसे वेपन नहीं जाए तो फिर उसका 60,000 70,000 HP हो ही नहीं सकता है. तो उसके लिए उसका वेपन होना I see the नेसेसरी है. value in my एंड दैट opinion. वेपन अदर देन But नीलू I एंड लेला also कोई see और the यूज कर ही meaning नहीं in सकता. all तो the नीलू इज अ endeavors A of tier the people कैरेक्टर. of Fontaine. डोरी I सी है. believe डोरी I का will क्या काम है? continue डोरी to खाली take हेल pride in हील करती fulfilling है my और कुछ है ही duties. नहीं. डोरी हीलर है और उससे अच्छे हीलर है गेम में. साइनो एज अ इलेक्ट्रो डीपीएस आई वुड गिव हिम ऑल्सो A tier में. ऑन फील्ड डीपीएस इन हाइपर ब्लूम टीम्स बहुत अच्छा है. साइनो विथ नाहिडा इज अमेजिंग कॉम्बो. साइनो एंड नाहिडा कॉम्बो बहुत ओपी होता है. साइनो वुड आई वुड गिव A. With a new set, F2Ps get 670k without signature weapon. हाँ, but there is one more weapon also, 4-star जो अब भी आया है. Barbara much better than Dory. Oh yes, I would give Barbara here and Dory here, बराबर. Kizuna 40, Shinobu के S के लिए plus I like Shene as Smash. Yeah, thank you for the 40. मेरा favorite DPS तो अभी Wanderer है फिलहाल के लिए. Candace Hydro, Candace as a on field shielder है वो. on field shielder. उसका और कोई काम मेरे को दिखता नहीं है Candace का. मेरे को पता नहीं Candace और किधर यूज होती है. Candace, people make Candace Water as comes in many a flavors for to the discerning palate. I don't know. Candace का मुझे कुछ आइडिया नहीं है. I would give जिसका मुझे आइडिया नहीं है मैं While उसको water C में from डालता हूँ. Liyue has an enduring नाहिडा aftertaste. In हाइड्रो Inazuma, एप्लीकेशन Candace the का कुछ water नहीं है भाई. possesses a depth of flavor unlike any other. Sumeru's water, meanwhile, has नाहिडा क्या a rich बोलते हो? and complex flavor Easy S. profile, but it must be savored नाहिडा is patiently easy to S. fully appreciated. Dendro application the best. Alt का range the best. Can increase Dendro damage bonus. Can increase elemental mastery. Best and best भाई. नाहिडा बेस्ट है भाई. लेला second best shielder in the game है. लेला second best shielder in the game. If you don't have Zhongli, you can use Leila, and sometimes Leila shields last long. Sometimes in some situations Leila's shields last longer than Zhongli,
एंड मैंने लेला काफ़ी यूज़ किया है। लेवल 70 लेला मैंने यूज़ किया है, मैंने लेवल 70 लेला मुझे बहुत हेल्प की है, तो आई वुड गिव लेला ए। मैं लेला को ए पे रखने वाला हूँ। लेला के लिए अभी एक नया 4 स्टार वेपन भी आया हुआ है, सो लेला इज अ ए फॉर मी। वॉन्डरर easiest एस भाई, इतना ओपी डैमेज है, इतना ओपी। अगर तुम्हारे पास C6 फारूजान नहीं भी है ना, फिर भी वो 20k का डैमेज देता है। विद C6 फारूजान ही गेम्स 30 to 40k का डैमेज, विदाउट फारूजान वो 20k देता है। एंड भाई वॉन्डरर एक्सप्लोरेशन में, डैमेज डीलर में, सब में नंबर 1 है। एक्सप्लोरेशन में कितना अच्छा है, दैट इज भाई उसको मैं एस दे रहा हूँ। अगर वॉन्डरर का काम एक्सप्लोरेशन में नहीं होता ना, मैं वॉन्डरर को ए देता, बट वॉन्डरर एक्सप्लोरेशन में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। रिग्ड क्या है ये? फारूजान फारूजान ए टियर। फारूजान को तुम सब डीपीएस बनाओ, शी कैन गिव 60k का अल्ट डैमेज, सब डीपीएस 60k अल्ट डैमेज। C6 कौन सा नेसेसरी है, बट फारूजान इज क्लियरली अ ए। फारूजान C6 फारूजान इज यूज्ड फॉर जाओ, वॉन्डरर, देन हेजो, और कौन है एनिमो कैरेक्टर, और कौन है? इतनी यूजफुल है ना फारूजान भाई, बहुत ओपी है फारूजान। याओ अगेन डेंड्रो एप्लीकेशन ओपी, हीलिंग दी ओपीएस भाई, दी नहीं बोलूंगा बिकॉज कोकोमी पहले आती है, बट आफ्टर कोकोमी क्या अरे चुप कर ना 2 मिनट। याओ इतनी अच्छी है ना भाई, इतनी ज्यादा अच्छी है याओ। नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। मैंने C0 याओ यूज किया है एंड शी इज सो गुड। C0 याओ इज ऑल्सो गुड भाई, मेरे लिए C0 याओ पे कितना काम किया है। याओ को मैं S नहीं दूंगा। Water comes in many flavors to the A discerning I would give. palate. Mondstadt's water Barbara is better than crisp any healer. and Hat. pure, while water from Liyue I'll hit has an them. enduring aftertaste. Easy S भाई। In Inazuma, I'll hit them the water easy as possesses है। a depth of flavor क्या unlike डैमेज है any other. अलेतम का भाई। Sumeru's water, meanwhile, प्रॉपरली has अगर a तुमने rich अलेतम and बिल्ड किया ना, complex ही flavor इज profile, ओ माय गॉड but it must कैरेक्टर। be savored अब इसमें patiently to fully द रेट ऑफ यूजेज ऑफ अलेतम इज सो मच, बहुत ओपी है अलेतम। डिया बताओ, डिया क्या बोलते हो? क्या बोलते हो तुम लोग? जो बोलोगे ना डिया, उस पे डालूंगा मैं डिया को। डिया C, डिया B, डिया D, डिया A। Let me create a poll for this. अब बताओ, मैंने पोल क्रिएट कर दिया, बताओ डिया को सबसे ज्यादा वोट जो मिलेगा उस पर डालेंगे। तब तक हम मीका पे आते हैं। मीका का कॉन्स रिक्वायर्ड है, कॉन्स नहीं भी रहेगा तो भी ही इज यूजफुल। द बेस्ट ही इज इन C6 कॉन्स, बिकॉज C6 कॉन्स में वो अटैक्स भी बढ़ाता है, I see the value फिजिकल in my डैमेज own बूस्ट भी work, देता है। but I also see the meaning in all the endeavors of the people of Fontaine. I believe I will continue to take एस कहाँ pride है? in fulfilling my duties. एस भूल गया मैं। डिया को एस में नहीं डालने वाला, हट, एस तो कभी नहीं दूंगा। ABCD में से होगी डिया। हाँ, मीका का वॉइस इरिटेटिंग है, बट मीका मेरे लिए तो एज एक हीलर भी है वो। आई वुड गिव मीका, आई डोंट नो, इज ही B वर्दी और C वर्दी, आई एम नॉट श्योर। हम इसको भी बाद में रखते हैं। Water comes in Kave. many flavors to the discerning palate. Pros, he is Mondstadt's hot. water is crisp and pure, while बहुत water from stylish Liyue है। has an enduring aftertaste. In And he is hot. Inazuma, the water And he is possesses hot. a depth of And he is flavor hot. unlike any other. अब Sumeru's बात करते हैं water, उसके एबिलिटीज की। has a rich and Best complex bloom flavor driver. profile, but it must be savored Bloom करना patiently to easy रहता है fully उसके लिए। appreciate it. कावे का और कोई ज्यादा है नहीं एज सच यूजेज, इसलिए मैंने उसको B में डाला, वरना A में डाल दिया था। बाइजू इज ऑल्सो A tier कैरेक्टर। वाई? हीलर, शील्डर, इजी टू बिल्ड, कैन गिव HP वेपन। इजी है बाइजू शील्ड में रहता है, शील्ड में रह के वो हील भी करता है। स्लो हील्स आएंगे ठीक है, बट शील्ड है करके हील्स जल्दी नेसेसरी हो जाते हैं। हील्स कैन बी इजीली डन। बाइजू इज A tier कैरेक्टर।
नीनू लेफ्ट द चैट। अबे तू ऑन कमांड ब्लूम ड्राइव यूज कर सकता है फ्रॉम कावे। ब्रो डायोना का शील्ड बकवास है, बाइजू का शील्ड बेटर है। डायोना का हील्स बकवास है, बाइजू का शील्ड बेटर है। लिनेट, मैंने ऐसा अभी तक लिनेट किधर इतना यूज किया नहीं है, सो आई एम नॉट श्योर हाउ गुड लिनेट इज। लिनी मेरे लिए तो भाई एस टियर है, लिनी मेरे लिए एस है। चार्ज अटैक डैमेज इतना हाई है, इतना ज्यादा। उसको मोनोपायरो में डाल दो, क्या डैमेज देता है भाई, बहुत ज्यादा डैमेज देता है लिनी। लिनी इज द बेस्ट। नर्वलेट एस बाय नर्वलेट वॉइस, नर्वलेट फेस, नर्वलेट हॉटनेस, नर्वलेट अटैक। And Nervalet is a good F2P character also, because F2P weapon दे दो, he will deal insane damage with F2P weapons also. Nervalet is an easy S. Riotsley अभी तक हमको पता नहीं उसका कितना डैमेज ऐसा होएगा, so I'm not gonna. Riotsley and Foculos उसका टियर लिस्ट चेंज होगा। ओके, so Riotsley and Foculos was ट्रिपल एस टियर कैरेक्टर, बट अब वो एस टियर नहीं रही आई थिंक उसको, बिकॉज ये कर दिया, नर्फ कर दिया थोड़ा, तो आई थिंक ए पे आ जाएगी बकट, लेकिन बफ कर दी तो ए ऐसी रहेगी बिकॉज उसका बफ्स है अभी भी। Riotsley सब लोग अभी एस कर रहे हैं बिकॉज आवाज इनके से अच्छा दिखता है वो, तो मैं फिलहाल उसको ए में डालूंगा। लेकिन किरारा एक्सप्लोरेशन ओपी माऊ मांगी रहती तो के मापनू मांग से तो आप ही देसू एम का ही नहीं, मांग से मांग से। In Inazuma, the water किरारा possesses a शील्डर है, depth of flavor एक्सप्लोरेशन भी unlike बहुत any बढ़िया है other. किरारा का। Sumeru's water तो meanwhile, has a rich and complex क्या flavor बोलते हो? profile, but it must be savored किरारा के लिए और patiently क्या, through मैं तो ए पे डालने का सोचा infusion. बिकॉज वो कैट कैरेक्टर भी है। दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन, किरारा कैट कैरेक्टर। माओ भाई की क्रश क्या किरारा, यस। अच्छा डिया का क्या हुआ, बताया नहीं डिया का। पीपल आर सेइंग डिया इज ए टियर कैरेक्टर, ठीक है चलो फिर डिया ए टियर। मीका सी टियर में डाल रहा हूं मैं। I see the value in my own work, but I also see the meaning in all the फ्रेमिने endeavors ऑल्सो of the फिजिकल people of डैमेज डीलर Fontaine. अच्छा खासा दे I सकता है believe I डैमेज will continue to take फिजिकल pride में, in इसलिए मैं उसको fulfilling बी my पे रख रहा duties. हूँ। ना भाई ना ज्यादा हो रहा है अब। लिनेट क्या बोलते हो? हाँ, अगर ये डेंड्रो एमसी है तो ये ए पे आएगा, अगर ये जियो एमसी है तो बी पे आएगा, अगर ये हाइड्रो एमसी है तो भी बी पे आएगा, एनिमो है तो सी पे They are आएगा, the pride of Fontaine. Be sure to be इलेक्ट्रो friendly है and तो भी cause सी पे them आएगा, no harm. डेंड्रो है तो ए पे आएगा। सेम विथ लुमीन। लिनेट का मेरे को पता नहीं क्या है किट वगैरह। पीपल आर सेइंग लिनेट इज अ बी कैरेक्टर, तो आई एम गोना पुट हिम इन बी। शार्लेट हीलर है, ठीक है, उसका हीलिंग आउटपुट कितना होने वाला वी हैव नो आइडिया, बिकॉज शी इज अ हीलर आई एम पुटिंग हर इन बी फिलहाल के लिए। ओके, फिलहाल के लिए। So this is my tier list. According to me, this is what I am gonna rank the characters. This is what I'm going to rank the characters. So that's it for the ranking systems. वो तो रिलीज भी नहीं हुई, तुझे कैसे पता हीलर है? हीलर है, लोगों ने ऑलरेडी ये चीज लीक्ड है कि शी इज अ हीलर। I see the value in my own शी इज work, अ हीलर, वो ऑलरेडी but I लीक है। also see the meaning in all the endeavors बायस्ड, of the people सिर्फ of 3 Fontaine. कैरेक्टर्स बायस्ड रखे मैंने I इसमें। एक believe I will किरारा है, continue to take pride in fulfilling एक my वॉन्डरर duties. है, एंड एक और था, नहीं बाकी ठीक है। किरारा एंड वॉन्डरर को मैंने किया है बायस्ड। क्रायो हीलर है, बेनिट द ओनली मॉन्स्टर कैरेक्टर इन एस।
सेव करता हूँ मैं ये पहले तो। डाउनलोड इमेज, इतना मेहनत कौन करेगा, मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा। स्क्रीनशॉट लेके डिस्कॉर्ड पे डाल देते Melusines हैं। are beautiful creatures. They are the pride of Fontaine. Be sure to befriend them and cause them no harm. नेक्स्ट वेपन का हम अगली बार करेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं थक गया ये टीयर करते करते। वेपन्स कितने सारे हैं भाई, क्या बात कर रहा है तू। नेक्स्ट टाइम कॉल मी फॉर आर्टिफैक्ट टीयर लिस्ट। यस, करेंगे वो भी। दैट इज इट फॉर द टीयर लिस्ट गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वॉचिंग मतलब स्ट्रीम चालू है, मैं खाली इसको वीडियो Water टाइप comes in 39 many मिनट्स का वीडियो flavors बना to the है। discerning palate. 39 पूरा देखेंगे नहीं देखेंगे पता water नहीं। is ये हुआ कि नहीं, 5 मिनट है और Crisp and वी कैन pure. वन मोर, एक और हम लोग डोमेन कर सकते हैं। भाई प्रीमोस फार्म करने में इतना बिजी हूं कि न्यूवी को बिल्ड करना भूल गया। यू नो द कैरेक्टर दैट आई वांट टू बिल्ड, मेरे को एक यानफे करना है बिल्ड, मुझे किरारा बिल्ड करना है। देन निंगवांग भी एक हद तक है, डिया भी है बिकॉज इंटरप्शन रेजिस्टेंस। तो यानफे, किरारा, डिया, साइनो, पूजो सारा। जैसे मुझे C6 पूजो सारा मिल गई ना, मैं शुरू कर रहा हूँ ये बिल्ड करना। एंड यस, ये है मुझे जो अभी फिलहाल बिल्ड करना है। 6 आउट ऑफ 10 टीयर लिस्ट। चुप साले गुनीत, वाबो भी नहीं कर पाएगा। साइनो बैड है भाई, साइनो भाई। 5 मिनट है, Can we play Vanguard next time? तू इनमें से एक कर ले, काफी है। Add Astro. कर लूंगा मैं, देख ले तू। यस जीनोन बताओ। सन्याम 210 बोल रहा है। 2 आउट ऑफ 10 टीयर लिस्ट। ऐसा मत करिए मेरे सर, मेहनत की है मैंने। भाई मैं जो खुश हूं ना मेरी रेडन को देख के। मेरी रेडन 54/204 है, 267 एनर्जी दे रहा है। 54/204 पर मजाक नहीं होता है। 1900 अटैक भी है उसपे। वीकली मिशंस क्या है? डिफीट बॉस ओपोनेंट्स 10 टाइम्स। चलो बॉस ओपोनेंट मार के आते। एक किसको मारे, इसको मार देते हैं। Are you straight? Cause you said Kaveh is hurt, so I really don't know. I might be straight, I might not be straight. -1 out of 10. Prototype rank और Bennett के लिए starting के लिए prototype rank और for Bennett is good. And the best weapon 4-star में for Bennett is Alley Flash. And energy recharge weapon में जानना चाहते हो तो the Sumeru Dendro weapon. Solidify! Shadow Raven, let night fall. Clouds high. The birds call. Be sanctified. Silence! Wind strike. Oz, reveal thyself. Oh, reveal myself. ऑफिशियल में कितना EM चाहिए? डिपेंड्स। तू सबस्टार्च में भी EM ला सकता है, और अगर तू EM सैंड यूज कर रहा है तो अटैक परसेंट वेपन यूज कर लेना। अगर अटैक सैंड यूज कर रहा है तो EM वेपन यूज कर लेना। मेरे ऑफिशियल पे मेरे ऑफिशियल पे 64/151 है। universe and founded paradise. वेपन्स में मैंने अटैक वेपन यूज कर रहा हूँ
आर्टिफैक्ट्स में मेरे पास अभी सिर्फ 2 पीस गोल्डन ट्रूप है एंड EM सैंड्स यूज कर रहा हूँ मैं उस पर एंड इलेक्ट्रो गॉबलेट एंड सकलेट। मेरे को और 2 आर्टिफैक्ट सेट्स चाहिए गोल्डन ट्रूप के ताकि और ये हो जाए, मिल नहीं रहा है। मेरे पास 2 ये भी है, ये देखिए नोवेलेट के लिए बेस्ट है, HP क्रिट रेट क्रिट डैमेज, बट अभी नोवेलेट को हंटर सेट भी मिल नहीं रहा ढंग का। स्ट्रिनलेस विद अटैक सैंड्स, हाँ वही EM वेपन विद अटैक सैंड्स, और अगर अटैक वेपन यूज करो तो EM सैंड्स। मेरे पास EM वेपन बिल्ट नहीं है, अटैक वेपन बिल्ट, तो मैंने उसको EM सैंड्स दे दिया। कितना टाइम बाकी है? 37 सेकेंड है, चलो ठीक है हो जाएगा। ब्रो यू फाइट दैट बॉस इन रॉन्ग वे, की फर्क पड़ता है, मर रहा है। नो EM नीडेड भाई, EM मैं तो देता हूँ, EM काइंड ऑफ हेल्प करता है। पैनल बिल्ड करना वर्थ इट है अगर तुम्हारे पास कोई डेंड्रो डैमेज डीलर नहीं है तो, हाँ नाइडा है तो मत करो। अकाउंट में कभी जाओ से खेलना मजा आएगा, खेला है मैंने जाओ से। चलो डन, अब हम लेंगे ये। होपफुली मुझे आज एक अच्छा आर्टिफैक्ट मिल जाए, कोई भी एक सेट का। रुलाए ना ये गेम मेरे को, और थक गया हूँ मैं अब, मिलता ही नहीं है भाई। उस बॉस को बस प्लंज अटैक से मारो। मेरे पास वो वीडियो रेडी है, वो कल परसों आएगी। फूटाओ से भी खेला है, मेरे को यानफे यूज़ करना है, बहुत ओपी वाला यानफे। वो भी यानफे के लिए मेरे पास ओपी वेपन्स भी पड़े हैं भाई, क्या बात कर रहे हो तुम। न्यूविलेट के साथ सुक्रोज अच्छी है क्या? सुक्रोज C6 देना लेकिन, एंड हाइड्रो ही स्वर्ल करना। Time to go. मेरे काजुआ को देखो 733 EM है, मेरे को उसके आर्टिफैक्ट्स में अगर यहाँ पे EM ऐसे मिल जाता तो फिर मस्त होता, बट नहीं मिल पाया मेरे को ढंग के EM सब्सटेंस। मैं तेरे लिए बिल्ड करूँ यार, फिर तू मेरे को मटेरियल सब लाके देगा क्या? अपने अकाउंट पे मेरे लिए बिल्ड करने की बात कर रहा है? हाँ कर सकता। Settle down. The wind knows me. Fallen leaves adorn my By royal decree. Let the mighty be humbled. Silence. भाई CC बैनर्स के साथ हुटाओ कैसा होगा? हुटाओ की टीम में यू डू नॉट नीड अ हीलर। फर्स्ट ऑफ ऑल हुटाओ के लिए यू ओनली नीड शील्डर। 1 के EM से पासिंग मार्क पर काट दिया। हाँ बट 1 के EM अगर दे भी दिया तो उसको एनर्जी रिचार्ज भी चाहिए उतना ही। भाई ये सर्कुलेट क्रिएट होना चाहिए, ये शायद HP अटैक होना चाहिए। HP तो है बट सब स्टैट्स नहीं है। जाके जरा फेंकते हैं। Give me good EM. अबे ग्लैडी अरे यार, अरे यार एम्ब्लेम पे करना था, ग्लैडिश पे हो गया। सैडनेस।
अच्छा गाइस, मुझे भूख लगा है, मेरा खाना लेके आऊँगा। एंड तुम लोग मुझे बताओ कोई ऐसा गेंशिन वीडियो जो मैंने नहीं देखा है और तुम लोग सजेस्ट करोगे कि ये देखो करके, ऐसा कुछ बताओ मुझे। कोई तो एक वीडियो था ना कुछ तो देखने वाला, क्या था बताओ। Time itself is a silent song. Finger next time? भाई मेरी एडिट देख लो मतलब। Melusines are beautiful creatures. They are the pride of Fontaine. Be sure to befriend them. गलत जगह Cause तुम्हारे them no ध्यान जा harm. रहे हैं। Can we play finger? अरे वो कौन सा वीडियो था, किसी ने तो बनाया था। अरे यार वो बहुत ज्यादा खतरनाक एडिट करके डाला था। कुछ तो था ना। Time itself is a silent song. नॉन मेंबर्स का भी करता हूँ, बट हर एवरी वेंसडे करता हूँ। वही गेंशिन विश सिमुलेटर करना चाहिए हमें एक दिन। अबे वो कौन सा वीडियो है लोगों ने बनाया था, रुक डोरो के इस पे रहेगा। Time itself is a मैंने silent देखा song. नहीं है वो। चेज़नैन लव मशीन क्या होता है? हाँ एनीमे मैक्सोर का Silent song. ये वाला गेंशिन इज ए प्लेएबल एनीमे। This video is ये वाला वीडियो देखना है मेरे को। Time itself मैं जरा खाना is लेके a आता हूँ। silent song. ऑडियो ऑफ क्यों? रुक मैं आ रहा हूँ। ऑडियो अच्छा पीछे बैकग्राउंड ऑडियो ऑफ गेंशिन का। You are talking about Maxor, I think so. Yes, this is the Maxor का मैंने बोला Maxor। ये मैक्सर का वीडियो तो खोला मैंने, रुको थोड़ा वॉल्यूम में करूँगा। This video is a cry for help. Genshin Impact is a playable anime, and that's pretty good since my videos are attempts to make watchable anime. I can't believe it, guys. They made a sequel to Stockholm Syndrome. Welcome to the world of Tavant. You may have heard of it from all the free advertising that I'm doing. A beautiful post-apocalyptic nightmare world featuring a giant tree. Sorry, that's the wrong game. On our journey throughout the 7 nations, we will meet the world's most colorful cast of children, entrusted and empowered by the gods to wield elemental energy as dangerously as possible. I'm just a big fan of the characters in this game. There is no reason in particular. Assemble your team of heroic psychopaths and begin blasting, boating, cooking your enemies alive, visiting Baby's first casino, and with enough time, it will become Baby's last casino. But most importantly, have fun, because the game will try to stop you. I can assure you that the visual novels are exactly what Da Wei intended. So join me as I navigate one of the most beautiful, fantastical, and expensive game worlds ever made, one agonizing country at a time. This is it, guys. This is what $900 million can buy you. Are you having fun yet? Look, all I'm trying to say is, this is a weird episode of Ava. Your pain flies into the sky. Meet the royal ride. Sky. How did he make so good edit?
भाई कैसे episode Wow, 1 I haven't been here in 2 years. Welcome back to Mondstadt, and yes, the game still displays your IP address, just in case you're a little bit too critical. This place is where the player learns how to fight, learns how to kill innocent animals, learns that they are bisexual as soon as they see Kaya. So I think it's a great opportunity to teach the basics, and nothing else. The environment here looks like it shares a polygon. I think a good place to start is with our team, the Fulganasauria. Official, every crew got the schizophrenic, personality disorder, mentally and physically deranged, wife material. I'm serious about that. There's a quest where you enter her mind and she fights her Tolpa. End user license agreement. Literally the only physical DPS. Possibly racist. Has the biggest slappy in Tevat. Sangan cock. And Rosaria, who is dressed promiscuously. Sangan cock. Some people are good at what they do, except like you to win 50. यार दर्द कर रहा है यार मेरे को ऐसा मत So we need to cover her up in appropriate garments. God, I wish nuns were real. With our team assembled, we are now able to do nothing because I haven't explained the game. Genshin Impact is a based character RPG where each character wields one of the 7 elements, all of them interacting completely nonsensically. Water buffs fire, ice freezes water, plants buff electricity, a fucking gas leak. Dendro requires 9 tabs of Khan Academy. My team is based on not playing the game as much as possible. There is genuinely no cooldown to freeze. By the way, what I'm showing you now is considered tame. The game is actually supposed to look mentally deranged. The numbers are helping me to understand what's happening. Of course, some characters are bad, and others are very bad, but many are absolutely game-changing. There are characters that straight up allow me to fly, at least through regular means. This one fights with a pogo stick, and this one doesn't fight at all. My cock's crit rate is -87. The game also allows us to choose from a lot of weapons. I think I have a few copies, each one with their own properties and substats. Sometimes too many substats, like goddamn I'm fighting with a Wikipedia page. We've got bows, spears, paddles, big fish, sentient umbrella, child's bomb instructions. I hope you can see why there's a lot of variation. And also theory crafting. A lot of Chinese theory crafting. They take this game very seriously. Like right outside of a KFC seriously. And if you're wondering about the gambling, well hell, we'll get to it later. I have a lot to say about it. But for now, welcome to the land of the Anemo god, who is a twink that gets kicked in the balls. Twink that gets kicked in the balls by This guy's really jamming out. No chat, I'm not going to do that yoinky splinky. Oh my god, he just doesn't give a fuck. So what if I just oh no, he can't be stopped. Well, I guess if he can't beat him. Mondstadt is a depopulated anarchist state where there are no taxes, no police, and half the country is controlled by wolves. Wolves that you never actually see, unless you want to count Razor. I mean, there's the giant wolf, but he's kind of special. What the dog doing? As a result of this, nobody in Mondstadt has any money. Except for the church, of course. The city is undergoing a crippling wine epidemic. Look, I just think it's a serious funding issue when the cavalry captain doesn't have a horse. Therefore, most of your time is going to be spent cleaning up their mess. Their singular mess. Because there is only one enemy in Mondstadt. Yes, from the beautiful ruins of old to the peaks of Dragonspine, 90% of the enemies you encounter are Hilichurls, a sentient race capable of empathy and complex thoughts. Which is why they must be destroyed. Literally take a random location in Mondstadt. You are 10 seconds away from a Hilichurl. Why is that one unbirthing itself? Really cool that the only organization in Mondstadt is dedicated to race war. They even have their own language, which I'm being quizzed on. Honestly, I'm a bit of a yay data man myself. Really feeling that moohoo yay today. Don't say Nini Zito, it's basically a slur. They didn't like that. Look, what I'm trying to say is this place has problems, but ultimately they are cool problems. Mondstadt may not be that varied, well designed, or even have a story that I can't summarize in one sentence. The dragon was mean, and then he was nice. Sun Tzu. But ultimately, this is just the beginning of a long journey. This game is planned out 7 years in advance. So as far as the basics go, there is no better teacher than Mondstadt. But pretty much just the basics. I don't think I'm staying for the boss fights. What is happening? What the fuck am I seeing? Okay, can you stop playing for a sec? No. I need to go to my teapot! For the next stop on our War Crimes tour of the Balkans, we're heading to the Funny Nation. Post about this nation to instantly gain Reddit karma. And for that, we're going to need to climb as high as we can so we can deduce the direction. So we're going to this location on the map. If only there was a better way to view the world. Make sure to land on the elevator. Next, we're going to shit. We're going to
1 second. We're going to ascend to space. Why does that work like that? Oh my god, the planet's receding. I am alone in this hell on Earth. I think I'm gonna be here for a little bit. You know, it's real bad when the moon is physically below you. Hang on, guys, it's getting kind of dark, so I'm just gonna change the time real quick. Yeah, the game lets you do that. Well, folks, it was nice knowing you all. Never mind. He didn't die! इसका ऊपर से! भाई, ये glitch मुझे भी Hey जानना guys, है. Baxter here, and welcome to China. It's just China. 早上好上午，现在我有冰淇淋，我很喜欢冰淇淋. I really hope I didn't just tank my social credit. In our previous of adventures, we explored Mondstadt to learn the basic mechanics, and also race relations. So for Liyue, we're going to learn that we've been playing the game wrong. But before I can get to that, I need to explain my team. I call it the hot shower by force. Lord knows we need it. Xi Jinping. Yes, this is a man. I know it's hard to tell. He is also ridiculously broken on account of his ability to make enemies wet. Interpret that information however you want. Hu Tao is the owner of a funeral parlor, and she could use a bit of new business. She is also the winner of the Most Terrifying Sims Award. Like, the thread just doesn't end. He's still writing them. Most reasonable Hu Tao made. Yolande is a character that I play for the personality. She is also one of the most overpowered units Bro, no way he did that with personality. in the game because she's a second Xingqiu. I don't even care that she's a federal psyop. I can fix her. Yolande is a character that I play for the personality. She is also one of the most overpowered units in the game because she's a second Xingqiu. I don't even care that she's a federal psyop. I can fix her. And Toma, who is fucking spelled wrong. Just don't build Toma. With our team assembled, we're now able to trivialize the combat because this team is ridiculous. Fortunately, Genshin is not just a game about combat. It's a game about gambling. You see, Genshin Impact is what we call a gacha game because it has got me in its grasp, which means that the primary game mechanic is chance. Every character is chance. Every weapon is chance. Every piece of every build is fucking chance. Do you know what it's like to have a mathematically impossible goblet? Goddamn elating. Hey, so I see you're trying to level up your crit rate. Well, that's a weird way to spell defense. Fortunately, we can predict the outcomes of our character roles using some Eastern philosophies. And the answer is 105 on average. But don't worry, you've got a lot of time. I guess we're gonna wait a day. Because only a few 5 stars are actually available, and sometimes they aren't available. For 483 days, she is in prison for racism. But what are they going to do? Lock me up? So naturally, we need to feed our gambling addiction at any cost. And there's a few ways to do Yeah, that. Toma You is could from explore Inazuma. more, go on fantastic adventures, or find amazing treasures. If you want to stay poor, no. You see, the real money is made in the daily quests, which are a series of useful and normal missions, such as talking to people, murdering those people, talking to the hillagers very nicely, finding the weasel. Where do you go? And jumping on mushrooms. Who the fuck commissioned me to do this? We also have the power to send various characters on 20-hour expeditions directly to the coal mines. Look, guys, I really need these 2,000 upgrade materials. It's just best you don't think about it too hard. Greetings, traveler. I'm Astra Abyssal. Okay. What can I do for you today? Yeah, I'd like to send a child to the coal mines. What? Put her in for 20 hours. But traveler, she's going to die. The lithium is not going to mine itself, Catherine. But traveler. Do not question me, Catherine, or I'll have you stabbed in a future quest. By no way, by he did this. No effing way. No effing way. Child to a coal mine. Liyue is an authoritarian, militaristic oligarchy controlled by a committee of really hot lesbians. I believe in Ganyu supremacy. This nation is the land of contracts, and by entering, you have made the contract to not criticize the state. Consequently, Liyue is also where all money is printed on the planet. So, I guess Mondstadt's economy is powered by hopes and dreams. And also, the card game. Look, Timmy, I know your dad's dead and all, but do you want to play Gwent? A minor side effect of this is that Liyue is in the midst of a violent crime epidemic. As in, the majority of enemies in Liyue are human, and even worse, they're poor. So poor, in fact, that they're forced to fight you with Molotov cocktails and farming equipment. What is your plan, my guy? The masculine urge to dig a hole. By the way, we're the good guys. Speaking of digging holes, I should probably address this. It's a little difficult to ignore. You see, there are many beautiful places to see in Liyue, such as Night City, the fucking rice fields, the most annoying place to navigate on the earth. Like, please stop giving me commissions here. And then we have the Chasm, which is a secret underground labyrinth containing all of the game's eldritch horrors. And yes, this is just the entrance to the chasm.
Yeah, there's no sound effect for that. If you die down here, no one will hear your screams. As soon as you think you're done exploring, it just keeps going down. The devs had to add moon shoes to the game so I could keep playing it. Now that we're trapped down here, we only have 2 options remaining. We need to mine and we need to craft. The second part will come later. Okay, so now it's later. Unfortunately, I cannot craft a sense of humor. Look, what I'm trying to say is Liyue is a very diverse place. Certainly more diverse than Hilichurl Field number 6. But most importantly, Liyue is a land of questions. What secrets lie in this mysterious land? What adventures are still to be had? Am I gay now? It's almost enough to make you forget the nightmare pit. And look, Liyue might have a few issues with organized crime, sea monster attacks. It happens twice. And the landscape always trying to kill me. But hey, at least the story's up. It's okay. Can anyone here tell me why like there's like a giant bird next to me? It's weird. Oh fuck, where am I? Diagon Alley. Bye. I'm not gay. What's up, gang? It's me, Artakito. What? Okay guys, listen, we need to reach Japan. Don't worry, I have a plan to bypass immigration. We are going to walk there. Yes, that's right, we're going to... Excuse me, we're going to travel underneath the ocean. So apparently I just have to, That actually worked. Okay, I think I've, made a mistake. It's time to descend into the abyssal zone. Just to watch out for the void. What do I do about this? So I think I've been walking for, 20 minutes. I don't like this anymore. Okay, we're pretty close now, so, I don't think we're close enough. Please no, please no, please no. We're drowning there. My god! Almost here! What is up, my Thades and Gentlethems? Welcome to the land of Inazuma, a home to nobody because no one is properly housed in Inazuma. Previously, Mondstadt taught us how to play, and Liyue taught us how to simp. Well, the land of lightning is here to teach us that we have not felt true pain yet. But first, let's go over our team, which I will be calling the, Yandere Benzos. Yai Miko, Mommy, sorry, Sigma female, kidnapped a man and force feminized him. God, I wish that was me. Traveler, I'm making a call-out post to my twitter.com. What the fuck are you saying? I'm gonna piss on the fucking moon. Bruce, you can literally name him Bruce. That is actually how it appears in game. In fact, we could name him all kinds of things, such as Baby Girl, Dr. Ligma, Wabushidashangwo, Ballfart, Testicles. What is that? And last but not least, Hokushish, Hatsune Miku. This is literally just Miku. Like, they didn't even try to hide it. And Bennett, who is the single most overpowered unit in the game. Like, Genshin doesn't have power creep because of Bennett. Send this bitch to the coal mines and have his testicles exploded. Now, my previous teams, they were kind of nice. But this time, I'm not playing nice. I'm playing for funny numbers. Every single member is optimized beyond the boundaries of reason. I rolled 6 copies of Hatsune Miku, and now I can kill Tortellini in 2 attacks. It cost $50. Also, Bruce can fly, like actual flight. It breaks like half the game's AI when you do it. They're just very confused. My entire team is him shooting down at the peasants like an attack helicopter. Just don't ask me how long I farmed for this. I had to grind for this view. Hang on a fucking second. She's wearing socks in the water. Something is horribly wrong with this country. Inazuma is a third-world isolationist dictatorship, mostly occupied by catastrophic disasters, both natural and man-made, but mostly man-made. Me and the fellas watching Oppenheimer in the IMAX. Inazuma is also engulfed in a decades-long civil war, resulting in mass unemployment and a refugee crisis. Naturally, this is reflected in the enemy variety, because to visit Inazuma is to be accosted by hundreds of jacked homeless people. Like, these guys just stand in the rain all day. How do the Hilichurls have more shelter than this? It is also a land of many islands, which all act as their own individual institutions. So I think this is a great opportunity to educate you as to why you should never visit Inazuma. You know, besides the fucking puzzles. This shit is the work of Satan. Narukami Island is the only place in Inazuma resembling a civilization. The rest is basically just Martin Luther King Boulevard. The only disaster this island has to worry about is the government, and her name is the Raiden Shogun. Kanazuka is the first island to be made uninhabitable by nuclear weapons testing, which then proceeds to leak out of the elephant's foot in an amount so dangerous it makes Chernobyl look like clown college. I mean, I guess there's also the Kujo encampment, but we don't go to the Kujo encampment. Well, that's enough of that. Wait a minute. What the fuck? Yashiori is an absolute nightmare on account of the non-stop lightning storm and,
slightly imposing giant skull. My favorite activity is going to this place. It limits the land the lightning can strike, so it just fucking whacks you. Looks like another beautiful day in the great land of Inazuma. Of course, I could fix the problem if I wanted to, but when I began the quest to remove the lightning, I was struck by it. I'm gonna take that as a sign from God. Seirai Island is what happens when Mr. Beast donates 50 megatons of ionizing radiation to families in need. Like, this shit makes Evangelion look like a comedy special. The fact that there aren't even homeless people here probably tells you all you need to know. Surumi Island is a very isolated place, populated for thousands of years by bird-worshipping savages who need their mineral resources exploited. President Biden, please send Raytheon missiles so I can buy Dasani water and Cheetos. I just think it has something to do with the, interdimensional dog. Watatsumi Island is really nice. Like, what the fuck? Does this even count as an island? It's just so beautiful. I sure hope it's not hiding some kind of horrifying dark secret. Enkanomiya, horrifying dark secret. Enkanomiya is fucking Atlantis. You get there by jumping into the giant hole, and it's like, how is this legal? Are the developers okay? This place was once home to a thriving civilization, which collapsed nearly instantly after they discovered TikTok. It also allows me to toggle the powers of the artificial sun. And holy shit, this 5G connection is crazy. Look, I think you've got the idea at this point. As much as I've talked about reactions and children, Genshin Impact at its core is an exploration game, because it makes you explore your sexuality, and that fact alone makes Inazuma one of the best areas. If you don't count the story, please kill me, mommy, I've been a bad boy. And okay, this nation might be lacking in housing, basic infrastructure, and some unbombed land, but honestly, that's just part of the rustic charm. How else do you think this island got a giant crater? Just be glad you don't have to live in Inazuma. It's all fun and games until you piss off the geometry. No way, इतना अच्छा बना है और क्या description दे रहा है. Hi guys, it's me, Goro. Goro, oh, is that peanut butter? What the fuck? Peanut butter. अभी आएगा सुमेरु. Alright fellas, for our next stop, we're going to enter the Weed Land. We need to smoke that Zaza and fall unconscious. And to do that, all we have to do is not be stuck in Inazuma. So if you were a fan of our undersea adventure, then don't worry. This glitch is much worse. All we've got to do is, whatever that was. I can't let go of the W button, by the way. Get ready to receive some Holy Spirit. Okay, so we're just going down to we're going to Silent Hill now. Sorry guys, it looks like we're approaching meltdown. Hey, what's up guys? It's me, Maxo. 1 second guys, my mom's calling me. Hey mom, 1 second, I'm flying to get that Zaza. What does that mean? It means I'm low-key in a battle bus. Sometimes I wish you were normal. Okay, where are we dropping, boys? आ गया वो इनाजुमा नहीं सुमेरु. Hey there, my little Genshits. Welcome to the land of Sumeru. Hittite jump scare. The only nation in Genshin Impact that can use the internet, mostly for racism. Good to see that nothing's changed. It is also absurdly gigantic. Like, the map screen can't even see all of it. But before we can get into the intricacies of Sumerian society, I have to explain my team. The kindergarten. Nahida Kindergarten! I can explain. My girl is 10, but she is 10. Nahida is the literal god of knowledge, if you count knowledge as the personal thoughts of every NPC in Sumeru, which she can read. Even when I log into Discord, there's no escaping her. Oh my fucking god, they're still typing it. How many emotes do these people have? Does watching you count as a hobby? What? I've actually been watching you for a long time now. Excuse me, what? Nilu has a completely hollow skull. There is nothing happening inside her head. She could not pass an eye exam. Sangonomiya Koko... Wait a minute, I've seen you before. But fellas, I've got something to admit. You see, Kokomi's damage scales on health, her healing scales on health, and yes, even her health scales on health. So naturally, when it came time to build her, I used the wrong stat. It makes the numbers funnier. Yao Yao is very cute and bunny. Her playstyle is chill and relaxing. In fact, you don't even have to play as Yao Yao. You play as her artificial beast given life. It throws vegetables at them. How many people would you kill for Yao Yao is not the right question. The right question is how many people I would allow to live. Personally, I think this team is really good for not having a DPS, and we are going to need it for all the funny and interesting events this game has to offer. Because, dear viewer, I lied to you. The best way to make money is not actually the Weasel minigame. It is participating in temporary event content, which I can only describe as punishment for developers who are too insane. Event content such as Pop Hunt, a game where you disguise yourselves as various household items to escape the wrath of very stupid people. Oh god, I think he's got a whiff. Wow guys, this is just like Genshin Impact. Yeah, but I like to pay to see kids. You know what? I think it's about time that I show off my winning strategies. Fellas, I've got a good feeling about this one. All we've got to do is
Yep. Next, you gotta do this. He will never find me this way. Does he know? Oh my god, he doesn't know. Wait a second, no. All right, fellas, I got a plan for this map. We're just gonna stand here. He has no clue. I can't. Why is it working like this? I'm sorry, guys. Looking up is really hard. I am torturing this man. You could say that he's among us. We also have event content like the boat. I'm having so much fun with the boat game. The Pokemon Tournament arc. What is happening on my screen? Does that man have a fucking gun? The beetle cockfighting. I've always wanted to beat a child. And my personal favorite, Chinese New Year, because it makes me the most money. Just don't look up any of the cutscenes. Let's go! You butterfly, you too, buzz and buzz. Got no way. What the fuck? You know, Hu Tao, I think you've got some hidden talent. Please keep it hidden. That rap wasn't released. It fucking escaped. Kaya, you gotta watch out, buddy. You're rolling to the ragu too much. Sumeru is an autocratic Orwellian surveillance state with a little hint of apartheid, governed by the worst organization imaginable. University. This nation is the land of knowledge, with most of it being devoted to new, more efficient ways to be racist. And to that end, Sumeru is segregated between two distinct parts, each with their own unique ways to kill you. The forest is a terrifying safari hellscape, where each animal is not only able to kill you, but is evolved to. We've got tigers, cows, crocodiles, robot dinosaur, fungus dinosaur. Welcome to Jurassic Park. And my favorite animal type, poor people. But most importantly, the forest is where the white people live, and they're filling the library with video essays. This is the academia, who control Sumeru by spreading misinformation on the internet. Raiden, the academia doesn't want you to know this, but you can steal ducks from the public park. They're free, Raiden. The desert is a desolate, abandoned wasteland, once home to a thriving civilization. Before the Caucasoids built a giant wall between them. Does anyone else think this is weird? We've got scorpions. We've got scorpiouts. Welcome to Jurassic Hell. We've got the, never mind. So is he gonna, like, okay. And we've got worm demons. But my personal favorite obstacle is definitely the gigantic fuck-off laser. There are, of course, even more enemies, but most of them are just liberal propaganda to make you believe that race mixing is a physical need. And fellas, it's working. But hey, the desert isn't all that bad, as long as you ignore the racist genie quest. Motherfucker graduated from casual to competitive racism. Alright, later, Max. What? Wait. I gotta go AFK real quick. No! You can't do this to me! Look, the point is, Sumeru is massive, and it's not even done. And also, Liyue isn't done. And also Mondstadt. Yeah. But what Sumeru does have is an actually good story. Like, out of all the things I expected, Harvard building an Evangelion was not one of them. Shinji! Get the fuck out of here right now! You can't tell me what to do anymore, Mom. I'm finally inside of another man. Shinji, what the fuck? I am the all-knowing God. Jesus Christ, they really made this boss fight. Mobile game, by the way. So whether you're exploring deep in the woods at 4 a.m., finding amazing oases, God, I sure hope nothing whimsical happens here, fighting more minorities, I'm trying to be a police officer, or doing the 8-hour gnome people quest, that is a lot of side quests. There will always be a new surprise in Sumeru, and if future content is even a fraction as good as this, then I'm going to be playing this game for a very long time. Because, you know, I wasn't doing that already. What the fuck? Saito, where are you going? This man is fucking tweaking out right now. You know what, guys? Before I go, I want to give you all a fun tip that most Genshin players don't know. The age of consent is 18 years old. Age of consent! Byte. Aranara quest. भाई दर्द था वो. But somehow I completed it. Somehow. चलो आज के दिन का तो आई थिंक और कुछ बचा नहीं करने के लिए हमारे पास, तो हम लोग आज इधर एंड करेंगे. कल वी विल डू दी अकाउंट रिव्यूज. मैं नाम भूल गया था क्या बोलते उसको. कल हम करेंगे अकाउंट रिव्यूज, ठीक है. AMB 77 ब्रो नवेलेट मिलके F2P टीम बता दो. सो नवेलेट के लिए F2P टीम
नर्वलेट के लिए F2P टीम है जो मैंने लगा रखी है. If you don't have Kazuha, you can use Fischl. Sorry, you can use Sucrose. If you don't have Zhongli, you can use Lela. और अगर कुछ भी नहीं चाहिए तो नर्वलेट अकेला ही काफी है डैमेज देने के लिए. कल अकाउंट रिव्यूज करेंगे हम. वन मोर वीडियो ना, आज के लिए इतना काफी है. We'll do account reviews tomorrow. And I think this Thursday we will play Honkai Star Rail. Oh, Kasunaha is here. Hi, hi, hi. Thursday को कल करेंगे account reviews. Thursday को खेलेंगे Honkai Star Rail. कल कब आओगे स्ट्रीम पे? कल हम स्ट्रीम करेंगे 7:30-8 बजे का राउंड. F2P यूज बेनेट डायोनाइन फिशल. हाँ, बेनेट भी यूज कर सकते हो. होंकाई अपडेट. यस, एचएसआर में जिंगली आ गई, सो एचएसआर खेलो. आ गई कि आने वाली है? आ गई. अपडेट आ गया. आज है, कल है ना कि आज है? I see the value in my own work, but I also see the meaning in all the endeavors of the people of Fontaine. I believe I will continue to take pride in fulfilling my duties. वो तो खाली ये दिया ना वो लोग ने. नहा का नाम हर बार ऐसे क्यों लेते हो? ये क्या? I have come back after being supposedly dead for a month. क्या हो गया आपको? नहीं, अपडेट आ गया. नहीं, गेम प्री इंस्टॉलेशन ही बता रहा है. Melusines are beautiful creatures. They are the pride of Fontaine. Be sure to befriend them and cause them no harm. कल है अपडेट. ठीक है, तो परसों खेलेंगे हम. I bench 100 kg or 80 kg body weight. भाई ज़्यादा मत करो, मर भी जाओगे एकदम. Oh, today's scope I saw a chest in there, forgot to open it. So in my world you saw a chest that you will open in your world, ऐसा. How the enemy NPCs felt when you pulled out of the game. Hi Joy Boy, welcome to stream. नहीं, ये नहीं देखा. चलो भाई लोग कल मिलेंगे, ठीक है? अभी के लिए अलविदा लेता हूँ. कल करेंगे काउंट रिव्यू. थर्सडे खेलेंगे होंकाई स्टार रेल. ठीक वीडियो लोग. गुड नाइट, शब खैर. मिलते कल. जिसको भी मुझसे अबिस कराना है प्लीज मुझे डीएम कर दो डिस्कॉर्ड पे, ठीक है? मैं ऑफ स्ट्रीम करने के लिए तैयार हूँ. नोवेलेट यूज हाइड्रोपम्प. देखना ऐसा ही है वो. Antique's value is in the eye of the beholder. Can we play banker next time?
Water comes in many flavors to the discerning